देखिए, अगर आप अपने रिलेटिव्स को ट्रस्ट करते हैं तो इट इज़ अ वंडरफुल थिंग टू डू, बट इट वर्क्स ओनली फॉर relationships. It can be too risky if the advice is on money matters. In this video, I'm going to call out some important factors to keep in mind while investing through mutual funds, plus sharing some tips and tools so you're better informed and feel financially empowered. Coming up. Hey guys and girls, if you're meeting for the first time, my name is Robin and this channel is all about helping each other improve our knowledge in the field of personal finance and work towards the path of financial freedom. So if you're new here, consider subscribing. So the first and the worst mistake in my list is goal-less investing, or I call it going random. देखिए, स्मार्ट गोल्स बेस्ड इन्वेस्टिंग इज द ओनली सक्सेस मंत्र आउट देयर. रैंडम बाइंग एंड बाइंग बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अ फ्रेंड और अ रिलेटिव एंड नॉट ड्रिवन बाय अ फाइनेंशियल गोल इज अ कंप्लीट डिजास्टर. जब तक डेफिनेट गोल्स नहीं होंगे, टाइम स्पेसिफाइड नहीं होगा, इट बिकम्स अ यूजलेस एक्सरसाइज. आप इन्वेस्ट तो कर देंगे, फिर एवरी अदर वीक अपना पोर्टफोलियो चेक करेंगे, नेगेटिव में होगा तो परेशान होंगे. पहले डेफिनेट गोल्स बनाइए, मॉडरेट एक्सपेक्टेशंस रखिए ऑन योर रिटर्न्स. यू विल ऑटोमेटिकली नो कि यू शुड इन्वेस्ट इन अ इक्विटी फंड, डेट फंड और अ मिक्स ऑफ बोथ बेस्ड ऑन द मैच्योरिटी ऑफ योर गोल. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नेक्स्ट ईयर में कुछ गोल अचीव करना है, से ट्रेवल अब्रॉड, द बेस्ट रिकमेंडेशन वुड बी टू गो टू ईदर अ लिक्विड फंड और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड एंड नॉट टू अ इक्विटी ग्रोथ फंड, राइट? द सेकंड इन माई लिस्ट इज ट्राइंग टू टाइम योर एंट्री और एग्जिट. आप YouTube में एंड इन जनरल गूगल में सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी लिंक्स मिलेंगे जो आपको कन्विंस करेंगे कि व्हाट इज़ द लकीस्ट डे ऑफ द मंथ व्हेन यू शुड डू योर SIP. देखिए, अगर आपके तारे बुलंद हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं एंड आपके साथ कुछ भी हो सकता है, बट आसान भाषा में इसे टाइमिंग लक कहते हैं. हाउएवर, अगर आपका फोकस लॉन्ग टर्म है, गोल बेस्ड है, सिंप्लीफाई करिए इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लिकेटिंग इट. चूज एनी डेट ऑफ द मंथ. कंसिस्टेंसी इज द की. लगे रहिए. पेशेंस ऑलवेज हेल्प्स इन द लॉन्ग रन, especially in market. The third in my list is buying purely on past performance. किसी भी फंड हाउस की कोई भी स्कीम का स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट देखिए, छोटे छोटे शब्दों में बहुत साफ साफ लिखा होता है, पास्ट परफॉर्मेंस आर नॉट इंडिकेटिव ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स. बट फिर भी जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो हमेशा आपको पास्ट रिटर्न्स दिखाते हैं और आपको स्कीम्स बेचते हैं. देखिए, हिस्टोरिकल रिटर्न्स कैन बी यूज्ड एज वन ऑफ द फैक्टर to assess the fund house or the fund manager, but it should not be the only or the best way to do. So how to buy and choose the best mutual fund? I have a separate video for the same. एक बार check करिए and let me know your feedback. Next mistake to avoid is buying too many funds. Very common mistake. मैंने अपने जितने colleagues के portfolio और फ्रेंड्स के पोर्टफोलियो देखे हैं, समझे हैं, मोर देन 80% ऑफ देम आर होल्डिंग मोर देन 10 to 12 स्कीम्स एडेड ओवर अ पीरियड ऑफ 8 to 10 years. दिस इज अ फ्लॉ. यू नॉट सिंप्लीफाइंग इट. कुछ लोग समझते हैं मोर द म्यूचुअल फंड्स मोर द डाइवर्सिफिकेशन. एक फंड ही अपने आप में फुली डाइवर्सिफाइड है. एक कैटेगरी के दो फंड रखने की जरूरत ही नहीं है. यू कैन सिंपली हैव वन इंडेक्स फंड, से ट्रैकिंग लार्ज कैप्स लाइक निफ्टी 50, वन मल्टी कैप कैटेगरी एंड वन डेट फंड कैटेगरी. दैट्स ऑल. आपको फोर्थ कैटेगरी की जरूरत ही नहीं है. एनी टाइम इन दिस वीडियो, चेक आउट notes and links in the description below. I have listed out links to all these videos below and also some great resources for your reference. If this is your first time here on my YouTube channel, I will really appreciate if you hit that subscribe button, as this channel is all about helping each other onto the path of financial freedom. So if you're new here, please do subscribe. Last but not the least, another important factor to keep in mind is not to ignore your risk profile and asset allocation. बहुत important है ये. देखिए, कॉन्सेप्ट है fear of missing out, FOMO. 2017 सबकी खूब ऐश हुई. मिड कैप, स्मॉल कैप्स के अनबिलीवेबल रिटर्न्स. 2018 में जिसने अपनी एसेट एलोकेशन एंड रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इन्वेस्ट किया, आई थिंक दे आर वेरी हैप्पी इन 2019. इन्वेस्टर्स गेट कैरिड अवे एंड सफर फ्रॉम द फियर ऑफ मिसिंग आउट. एंड अगर आपका एक्सपोजर मिड एंड स्मॉल कैप फोकस स्कीम्स में ज़्यादा है तो एनी यूटर्न इन मार्केट्स में लीड टू बिग लॉसेस. अपना रिस्क प्रोफाइल एंड एसेट एलोकेशन रिव्यू करने के लिए एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल कोच से बात करिए एंड रिमेन फोकस्ड टू योर गोल्स. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग विद कौन क्या खरीद रहा है एंड कौन किस फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, इट मेक्स सेंस टू स्ट्रिक्टली adhere to your own asset allocation and go by your goals. So to summarize this video, the key things we discuss is to invest with the goal in mind. Don't try to time the market, but rather spend time in the market. Don't just use past performance to choose the fund to invest. Don't overkill by buying multiple funds. Just 2-3 categories are fine. Don't ignore your risk profile and the asset allocation. Please do share, subscribe and like the video if it was of any help to you. Next video में हम बात करेंगे on some of the best ways and easiest way you can invest through mutual funds. In the meanwhile, if you have any questions, suggestions, recommendations, please write them in the comment section below.
Also, you can write to me on my Facebook, Twitter, Insta @The Rich Budget, and I sit down every week to respond to them to the best I can, or I will guide you to the right resources. I'll see you next week. Till then, keep it simple, take care, and go shine.